Friends, on behalf of My Retired Life Foundation, we extend a very hearty welcome to today's Suno program. It is a monthly program where people are given a chance to express themselves on anything what they like to speak on. This month there is no theme, and therefore the choice is wide. Anybody can speak on any relevant issue for all of us put together. I'm sure that the event is going to be a fun-filled one. To anchor this particular program, we have with us dear colleague Lakshman Bhatta Madam. May I request Lakshman Bhatta Madam to please come forward and take it over. Yes, sir. Thank you, Sengupta, sir, for giving me this opportunity to anchor the Sabki Suno program for the first time. Uh, Good evening to all my MRL friends. Namaskar, Vanakkam. Welcome to another beautiful Tuesday. Beautiful Tuesday because for MRL, Tuesdays are very special. First three Tuesdays, we enjoy the music, and the fourth Tuesday, Sabki Suno. This is one of my favorite programs because this is a very unique program. All of us get a chance to express ourselves, and we share the experiences. Then we share our thoughts, sometimes stories also, and the knowledge. Sometimes they're witty, sometimes they're emotional, sometimes gyan, and sometimes inspiration. So today there's no theme. So let's start today's program. Let's see what our participants are having in store for us today. Today's first, जैसा सक्सेना जी ने कहा, गणिशायनमा कर रहे हैं हमारे आर के मोदी जी. आर के मोदी जी प्लीज आइए. थैंक यू. आवाज आ रही है मेरी? जा बिल्कुल आ रही है. टुडे सबकी सुनो, मेरा टॉपिक है हैप्पी लिविंग बाय सीनियर सिटीजन. So we all know that happiness is the ultimate goal of human being. Happiness is important to a quality, purposeful life. What makes people feel happy is different for each person and often changes over time. Falling health, declining mental agility, reducing social importance, increasing anxiety, all contribute towards a difficult life for elderly. They feel helpless, and this often leads to sadness. To remain happy and to live life meaningfully with happiness becomes a challenging job for many seniors. Seniors need to understand that old age is a reality of life and we have to enjoy the life. To build happiness, we must follow certain steps. First step is to be happy for elders is that he must have a strong willpower to lead a happy life. Otherwise, all efforts to keep happy will go to drain. For that, we must imbibe three aspects of happiness. First being happy or feel happy. Second is think happy. And last is act happy. Then comes our health. It is the primary concern for elders. We have to bring changes in our lifestyle and daily routine. Those changes are leave bad habits like smoking, drinking, avoid junk food eating, instead eat more vegetables and fruits, go to bed early and rise early. Here is a proverb, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. It's very true for senior citizens. In the morning, do meditation, yoga, some light exercise, and also walk for 1 hour, brisk walk in the morning to keep ourselves fit. I've given you only few of them. There are so many things to follow. Then third step is forget past and avoid stressful thinking for future and try to live in present. Even if you want to go to past, remember sweet and happy memories of past. Then fourth one,
it is said that empty mind is devil's workshop. Engage engage in activities that keeps you meaningfully busy, agile, engaged, and happy. Then next is you change your attitude from negative to positive, because our way of thinking will produce good and bad hormones in our body. Then sixth one is don't compare yourself with others and be contented with what you have, and it gives you a peace of mind. We must try to keep smiling always, as it triggers happiness hormones in our body. The next is discover new interests or hobbies which will fill us with joy. Recently, in an article, Age is No Bar for Learning in Free Press Journal last Saturday by Sengupta sir, is quite elaborative and inspiring. Many MRL members learned and started singing, speaking, instrument playing, etc. Try to give back to society, like charity work for society, helping needy persons, teaching children, etc. So many works are there. Now here I will conclude. So if we follow the steps mentioned, we, the seniors, will truly lead a happy life. Thank you. Thank you, Modi sir. Thank you for enlightening us to have a happy elderly life. Actually, आपने जो भी कहा था, it is applicable to everybody, young or old. But I think we are the privileged ones because we stay in a society where there is a lot of awareness and we have a little more time than the youngsters. We can focus on our health, and above all, we are part of MRL. And MRL mein, I have not seen anybody frowning. I have not seen anybody sad. Correct. I have not seen anybody sick. Yeah. So, age brings us a lot of health issues. There's no doubt about it. But we, as living in an urban society, we are aware and we try to overcome them as far as possible. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. अभी हम नवीन दुग्गल जी को सुनेंगे. नवीन जी, आज आप क्या सुना रहे हैं? अभी आपको सुनेंगे हम. थैंक यू वेरी मच. या वेलकम सर. आपने देखा मैंने निकाब पहना था कि इसलिए नहीं कि आपसे मैं छुपा रहा हूँ कुछ जी. ये पर्दा है, पर्दा उठाओ और एक्सेप्ट करो ईच अदर विद ए क्लैप. यस. एक गहरी सांस लो और धीरे से जोड़ो, और एक और गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ो. आज का मेरा टॉपिक है how can I be better me to serve the organization or this world or serve myself. पिछले कुछ दिनों में हमने सुना कि हमारे इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर वो इंडियन बॉर्न थे, और एक कार्टून देखा कि चर्चिल ने लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, एंड टुडे बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड ग्रेस ऑफ द इंडियन स्पिरिट्स each and everyone has contributed. और आज के उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे एक इंडियन ओरिजिन के हैं. द आइडिया इज एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर, जो मैंने फर्स्ट वर्ड कहा. नेक्स्ट इज, मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपने इधर अपने नेरुल में बहुत सारे गार्डन हैं, देयर इज नो डॉग्स गार्डन. तो मैंने एक पता लगाया और मैं वहां गया और कुत्तों के साथ और बिल्लियों के साथ बात कर रहा था. आप पूछेंगे क्यों? आई प्रेफर टू टॉक टू द डॉग और द एनिमल और द एनवायरमेंट with a positivity. The idea is not that other gardens are not good or having these differences. तो हमें ये भेदभाव निकाल देना है. अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि how can I be better me. हम दुनिया को कहते हैं जो मैं कहता हूँ मेरी सुनो, दुनिया को छोड़ो. मैं कहता नहीं, पहले दुनिया की सुनो, इवैल्यूएट करो, सोचो कि किस कंटेक्स्ट के ऊपर बुला रहे हैं, क्या मेरे पास उतना टाइम है, फोकस है, तो कमिट करके जवाब दो. नहीं तो बोलो बहुत धन्यवाद, आपका एडवाइस अच्छा लगा, हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अक्सर 70 साल के बाद
लोग अक्सर समझते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, चला मुरारी हीरो बनने, चले ब्रह्म शास्त्र जैसे वो लाइट देखते ऊपर और कुछ लाइट दिखाई नहीं देती. इट इज ऑल ए इल्यूजन ऑफ योर थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, मीडिया, एनवायरमेंट, पॉलिटिशियंस वगैरह वगैरह. तो हमें उससे अलग कैसे करना है अपने आप को? हाउ टू कम टू द कामनेस? इस इतने पोल्यूशन की लाइफ में हर जगह अनहैप्पीनेस ही है. हाउ टू क्रिएट हार्मनी, how to become a smiling face. But before that, we need to be strong enough with willpower, with the attitude of gratitude, with the surrender. And more than that is appreciation के हर चीज, हर बंदा is unique. You cannot change their characteristics, but you can definitely change the behavior within to give the impact, like looking into a mirror. आजकल के दिन क्या करते हैं? सेल्फी लगाते हैं, 4 बार देखते हैं, ये ठीक नहीं है, मेकअप चेंज कर लो, हेयर स्टाइल चेंज कर लो, मेरे जैसे बोलता है बाल काले कर लो, लेकिन दिल तो साफ रखो, हंसते तो रहो. अरे भाई क्या फर्क पड़ता है? हम कठपुतली के जैसे हैं. हम किसी के बारे में कंपेयर ना करें, ना दूसरों की सुने सबकी, लेकिन कुछ एडवाइस किसी बुजुर्ग ने मुझे पहले भी दिया था और आज भी मैं रियलाइज किया. स्टॉप एक्यूजिंग एनीवन, इंक्लूडिंग योर वाइफ, सर्वेंट्स, डॉग्स और एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड. बी हम्बल एंड बी, इफ यू हैव टू डू दैट रोल प्ले, how would you perform? How would you listen? Put others in your shoe. Put yourself in others shoe. Sorry. Speak precisely. मैं तो बहुत बोलता हूँ, लेकिन मुझे चुप रहने का MRL में बड़ा फायदा हुआ है. So answer precisely and use more of the brain. Don't criticize. Don't jump to conclusions. Don't be prejudgmental. Let go, everybody. Let go, let go, let go. Then you will be your whole work yourself. But in the same time, plan your day in small stages. Morning time, afternoon time, evening time and night time. उसमें सारे इसीलिए आप जो योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, वॉक के लिए जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह जो मोदी साहब ने कहा वो फॉलो करें. बट इट इज अप टू यू. डोंट एक्सपोज योर प्रॉब्लम्स एवर. This is a very key point because hackers and many other malicious people or bankers who are eye on your money, on your media, on your telephone, at your home. तो हम वो Instagram में लिखते हैं, Facebook में कहले मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे गए और घर की छुट्टी हो गई, साफ हो गया. समझ गए? और excellent to have a wonderful life. How I can be creative? How can I help you? It is, in other words, it is not help you in every way, but the attitude of gratitude. कभी कोई रोड क्रॉस करता है तो उसको मदद करके क्रॉस कर दो. किसी को कोई गिर जाता है उसको उठा के खड़ा करके उसको साइड में रख दो. डोंट लीव द पर्सन, इग्नोर इट, मेरा काम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है. आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, they are so self-centered. I will not say selfish. They have not been trained. That is someone else who is elder to me, my parents, my teachers, my people around me. One day I also will face the same thing. लेकिन हर जना कहता है टाइम नहीं है, मेरे से बात बाद में करना. They keep on postponing and ignoring us purposely or knowingly or unknowingly. We don't want to blame them. Never insult your near and dear and your own people. कई बार हम होटल में जाते हैं या फ्लाइट में, तो कई बार कुछ ठंडा खाना मिलता है तो एयरलाइंस वाला बोलता है सॉरी द इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट वर्किंग और द केटरर डिड नॉट सर्व इट वाज डिलेड बाय 45 मिनट. तो डोंट गेट अपसेट. तो बोलो अच्छा थोड़ा वार्म भी होगा तो चलेगा, एक्सेप्ट इट बिकॉज कुछ खाना मिल रहा है खाने को. क्रिटिसाइज करने से बोले आई पेड यू द मनी एंड ऑल, तो भूखे भी मरो, दुखी भी रहो, और बोले सब कुछ अपना पीस ऑफ माइंड, ब्लड प्रेशर सब बढ़ा देते हैं. तो व्हाई डोंट वी स्पीक, व्हाई टू स्पीक इन हार्ट टोन, व्हाई नॉट बी हम्बल. अरे सर आपसे बढ़िया बंदा हमने मिला ही नहीं हमें.
accept things as they are. And to conclude now, MRL has given is a best platform for me to improve myself, whether it is photography or any task at a given time from anybody. It is not only Sen Gupta ji. आप सबको आमंत्रण है, लेकिन ये मत कहो कि बाजू वाली ने क्या कहा कि उसने क्या कहा. Let's stick to our focus of Satyameva Jayate and world as one. Thank you. थैंक यू दुग्गल जी, आपने तो अपने तरीके से बहुत अच्छी बातें कही. इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मुझे ऐसा लगता है वी शुड कंप्लेन लेस एंड बी मोर कंपैशनेट. दैट इज द समरी व्हाट आई कुड गैदर फ्रॉम व्हाटएवर यू सेड. आपका बातें सुन के मुझे एक शेर याद आ गया. मतलब से तो अच्छे बनने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, मतलब से अच्छे बनने वाले तो हजारों मिल जाएंगे. दुनिया में कुछ अलग बनना है तो बिना मतलब का अच्छे बनो, है ना? Very true. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो Don't मच. expect anything in return. Be happy with a smile. Thank you. थैंक यू धन्यवाद. दुग्गल. एंड आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज रमणी मूर्ति जी. रमणी जी, आज आप क्या सुना रहे हैं? रमणी जी. हेलो एवरीवन. हेलो. मेरी आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया आ रही है, बताइए. ओके, चलिए. तो आज शुरू करती हूँ. टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट मंडला आर्ट्स. आई होप एवरीबडी कैन लिसन. माय वॉइस इज कमिंग. Yes, Ramani ji. Continue. Hello? Can you all hear me? Okay. The word mandala in Sanskrit means a circle or a chakra. The term mandala is derived from two different words, la and manda. They mean container and essence. A mandala art is a spiritual and ritual symbol both in Hinduism and Buddhism, which represents the universe. There are different types of mandalas found in different cultures and are used for a variety of purposes, both artistically and spiritually. There are 4 main mandalas which are used for different purposes. First one is outer mandala. The outer mandala represents the universe. These type of mandalas are mainly used for offerings. Mandalas are mainly used for offerings. Offering an outer mandala is a standard practice in Buddhism for thanking people. Second, teaching mandala. Teaching mandalas are considered symbolic. Every shape, line, in a teaching mandala represents different aspects of Buddhism. A monk learns to create these mandalas while taking his monastic education. These are colorful mental maps which describe the Himalayan culture. Healing mandala. These are more intuitive compared to teaching mandalas, and these are made for meditation. The purpose of making healing mandalas are to deliver wisdom, create the feeling of Zen, like calm and aid in focusing and concentration. Sand mandala. It is observed that both Buddhist monks and the people of Navajo culture have long used sand mandalas as a traditional religious element. These sand mandalas are made up of intricate designs where a variety of symbols made from colored sand are used. These symbols represent a transcendence of human life. Ways to use mandala for healing. Mandala meditation. The person should choose a mandala that appeals to him. He should begin by focusing on the center of the circle. It is through this point one can enter the mandala journey through the symbolism. The person should focus and take it in the beautiful patterns of and colors of the mandala without getting distracted.
As soon as the person delves deeper and deeper into the mandala, he should continue to relax and breathe. Continuous practice will lead to a peace of mind. Creating a mandala. This can be a very healing experience. One should use one's intuition as a guide as to what medium one would want to use for the mandala. One should set up one's intention as to what type of healing one wants to evoke. Then he should spend a few minutes meditating upon one's intention. Once mentally prepared, he should be creating the mandala working from inside out. This will lead to utter concentration and will distract all other thoughts. Now, the next is coloring a mandala. Once a mandala is created, one can start coloring the mandalas using whatever medium one desires, such as paints, watercolors, crayons, etc. When one creates colors or looks at it, this acts in silently programming the mind on the essence of oneness or completion. The idea behind meditating with mandala art and coloring or creating is to declutter the mind by forcing it to focus on the mandala design. This practice helps in distracting oneself from everyday distraction. Concentration on the design aids in calming the mind. Benefits of this therapy. Stress reliever. It acquires stress relief and reduces anxiety. Therapeutic effect. Healing power and helps recoup fast. Brain stimulator. Refreshes the brain. It increases problem-solving skills, refines cognitive skills, and produces inner strength. Kindles the creative spark. The probability to rediscover their creative spark and implement in their lives. Immunity booster. Boosting the immune system, enhancing concentration, reducing pain, and promoting good sleep. Last but not the least, panache for several ills. Mandala art therapy is ideal for patients like epilepsy, lowering high BP, and cancer. Friends, each person's life is like a mandala, a vast, limitless circle. We stand in the center of a circle and everything we see, hear, and think forms the mandala of our life. Thank you. Thank you, Ramaniji. I think today you have elaborately explained the benefits, and actually for me mandala is just a beautiful drawing and which is meditative, but today I came to know that it has got such beautiful effects on your health, on your immunity, on your stress. And my daughter does mandala art. I will definitely show her your talk so that she'll be, once you're aware, you get more benefit out of it. Thank you so much, Ramaniji. Yes. Thank you. Thank you. Next on our list is Mr. P.J. Lakpate. Sir, you're there? So he's in the ICU. He is not able to connect. Okay. Next. Okay. Sorry for the input. Sorry to know that. Okay. Next, Sir Bharat Bhushan ji. आप हैं? नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है। आप ना माइक उधर ही रखिए, नीचे मत रखिए। आप जिस तरह से पकड़े हैं ना, तो सुनाई देता है बराबर। आपका स्वागत है, चलिए आप सुनाइए। आज के संध्या के कार्यक्रम में मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर सेन गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे आज एक अवसर प्रदान किया कि अपने मन की बात कह सकूं। थैंक यू डॉक्टर साहब। साथियों, आज मैं आपसे अपने मन की एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे ही मन में उठी थी अचानक, और वो ये कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें भेजने वाले ने ये लिखा था कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में काफी सारे मंत्री ऐसे हैं जो बहुत ही अल्प शिक्षित हैं। कुछ वहाँ पर
ग्रेजुएट भी नहीं है, इंटर भी पास नहीं है। मैंने यदि ये समाचार सही है, हालांकि मैं इसके बारे में नहीं जानता कहाँ तक सही है, लेकिन यदि सही भी है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं गई। नेहरू जी के टाइम में आपको याद होगा, कामराज नाडार साहब थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी कामराज योजना बहुत प्रसिद्ध रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम जिसको चुन करके पार्लियामेंट में, असेंबली में या नगर पालिका में भेजते हैं, तो इस विश्वास के साथ भेजते हैं कि वो नई नई योजनाएं बनाएंगे, नई नई नीति बनाएंगे, जिससे जनता का और देश का कल्याण हो। और इसके लिए उनका पढ़ा लिखा भी होना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ। लेकिन अक्सर होता ये है कि वहाँ पर जो सदस्य पहुँचते हैं, उनमें से कोई तो बहुत हाईली क्वालिफाइड होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही अल्प शिक्षित होते हैं। आप देखिए कि जब हम किसी को चपरासी के पद के लिए या कर्मचारी के लिए भी अगर हम नौकरी के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ भी शिक्षा होनी चाहिए। फिर इतने इम्पोर्टेंट पद पे जहाँ हमारे देश के लिए नीति निर्धारण होता हो, हमारे लिए योजनाएं बनती हो, वहाँ सबका शिक्षित होना जरूरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं आज तक शिक्षा को इतना महत्व दिया गया? ये मेरी समझ से बाहर है। खैर, मैं आज अपने जीवन का एक अपनी ही घटना शेयर करना चाहता हूँ, जो सत्य घटना है। मेरा भतीजा रुड़की यूनिवर्सिटी से एमटेक फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। उसके बाद घर पे भी ये विचार हुआ कि आगे क्या करना है। उसके पिताजी डिप्टी सीएमओ थे। उन्होंने ये कहा कि हमारी इच्छा तो है कि आईएएस या आईपीएस करके प्रशासनिक अधिकारी बनो और इस तरह परिवार का, कुल का और देश का नाम रोशन करो। तब उस लड़के ने मुझसे ये कहा था, हम सबसे कहा था कि अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं ऐसा करने का प्रयास कर सकता हूँ, और मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि मैं ऐसा कर भी लूँगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब हम इतना पैसा खर्च करके, इतनी मेहनत करके बड़े अधिकारी बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन जब कोई राजनेता हमारे यहाँ आता है, और ये हुआ भी कि रुड़की में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, सार्वजनिक कार्यक्रम, इसमें एक राज्य मंत्री जी पधारे थे। उनके गरिमा के हिसाब से वहाँ तैयारी की गई, सुरक्षा का पूरा इंतजाम था, और सारे आला अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हो या प्रशासन के हो, वहाँ पर खड़े हुए थे। नीचे उतरने के बाद जब वो मंच की ओर चलने लगे, तो पता नहीं उनको अचानक कोई कमी नजर आई व्यवस्था में, तो वहीं उन्होंने जोर से खड़े होकर के उन सबको डांटना शुरू कर दिया, और जोश में आकर के काफी अपशब्द भी बोलने लगे। उस समय ये नहीं देखा कि उनके आसपास पब्लिक भी खड़ी है, उनके मातहत स्टाफ भी खड़ा है, सब लोग खड़े हैं, लेकिन वो अपने जोश में आकर के उनको काफी अपशब्द कहते रहे। और जब एक ने सॉरी कहा तो उसको भी डांट दिया, अरे क्या सॉरी कहते हो, काम वाम भी करते नहीं हो, ये है वो ऐसे है, और बड़बड़ाते हुए चले गए। वहां पर मेरा भतीजा भी अपने साथियों के साथ खड़ा था। तब उसके दिमाग में ये बात आया कि यदि हम पढ़ लिख के कोई बड़े अधिकारी भी बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, लेकिन जब ये राजनेता आते हैं, उनके आगे हमारी हैसियत क्या होती है? हमें उनकी सब बातों को सुनना पड़ता है, सिर झुका के सहन करना पड़ता है, चाहे मन में ये आ रहा हो कि अरे ये तो हाई स्कूल इंटर पास है, लेकिन फिर भी हम सबको डांट रहा है। तब उसके मन में आया कि ऐसे अधिकारी बनने से तो राजनीति में जाना ज़्यादा अच्छा है। उसने ये अपना आईएएस आईपीएस का इरादा ड्रॉप किया, पीएचडी किया रुड़की यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में आजकल वो डीन के पद पर कार्य कर रहा है। अपने काम से वो संतुष्ट है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब हम इतनी जिम्मेदारी अपने उनको ऊपर विश्वास करके सौंपते हैं, तो एजुकेशन उसमें क्यों नहीं एक मुद्दा होता? ये भी होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी का नाम शायद आप सबने सुना होगा। उन्होंने हिंदी साहित्य में व्यंग्य के ऊपर पीएचडी की थी। उनकी 2 लाइनें मुझे अक्सर याद आती है और शायद आपको भी पसंद आएंगी।
गणित के अध्यापक से प्राचार्य ने एक दिन कहा, गणित के अध्यापक से प्राचार्य ने एक दिन कहा, इतिहास की कक्षा लेने के लिए। अध्यापक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हजूर क्षमा करें, मैं अध्यापक हूँ, एक राजनेता नहीं हूँ। और इसके अंदर एक बहुत ही शानदार हृदय स्पर्शी संदेश भी छिपा हुआ है। यही मैं कहना चाहता था आज की बात में। और जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सिसकियां लेता रहेगा, पीड़ा से कर हाएगा, बदली न नीति देश ने तो लोकतंत्र मिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी। हमेशा की तरह आपका जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, बहुत अच्छा रहता है। एंड एजुकेशन, नथिंग कैन रिप्लेस एजुकेशन, बट हो सकता है कि जब स्वतंत्र भारत में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के चक्कर में एजुकेशन को ज्यादा राजनीति में आने के लिए एजुकेशन को हेल्प ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। बट आई थिंक स्लोली थिंग्स विल चेंज। आजकल एजुकेशन काफी गरीब से गरीब लोग भी एजुकेशन, मेरा विचार यही है कि एजुकेशन को भी आवश्यक करना चाहिए। नहीं तो कई बार तो अंगूठा छाप लोग जो है ना, एजुकेटेड लोगों से बिहेवियर भी प्रॉपरली नहीं करते और उनको बड़ी आत्मग्लानि होती है जब वो सबके सामने उनको नीचा देखना पड़ता है। जी जी, एक्चुअली वो भी दिन हम देखेंगे शायद। एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और एज यू से चेंज इम्पोर्टेंट है, चेंज आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू भरत भूषण जी। थैंक यू वेरी मच मैडम। नेक्स्ट आनंद सक्सेना जी, आपसे हमने बहुत कुछ जाना है पहले भी। आप केमिस्ट्री में माहिर हैं, टेक्सटाइल्स के बारे में बताए, केमिकल्स के बारे में बताए, आज बताइए किस चीज के बारे में बता रहे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। आज का सबके सुनो प्रोग्राम में कोई थीम नहीं है, एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन मेरे लिए इट इज जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम विदाउट एनी सिलेबस। एनीवे, मेरा आज का टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज द एसेंशियल मार्क ऑफ इमोशनल एंड मेंटल मैच्योरिटी। Only grown-up people show adequate self-control in their behavior and in their response to their problems. The immature person will meet his problems with responses which seem satisfactory at times, but they defeat him eventually because he builds undesirable qualities into his personality. Generally, human beings react to frustration, failures, misfortunes, and defeat in three ways. The first response is feeling of despair, developing the sense of hopelessness and sense of grief. It is their belief that the whole world is hostile to them, and this response is known as self-pity. Second one is response is frustration, which leads to aggression. It shows itself in anger, temper, tantrums, aggressiveness, etc. And the third one is, it is possible response in that person who have learned the values and wisdom of self-control, with which I am mainly concerned today. Instead of breaking down into tears, despair, and mental agony, instead of becoming unadjusted and quarrelsome, we meet our failures with calm and cool-headedness. We reason out the situation and logically analyze the problem to tackle it successfully. Now, if I retrospect myself and ask, where do I stand? Am I self-pitying type? Am I weeping and making unnecessary noise at the time of crisis? These are not going to solve my problem. Again, am I in the second category? Am I aggressive when I am confronted with a problem? Am I shouting, threatening, making unnecessary fuss over my failures? And certainly it is not going to solve my problem too. Only proper self-control
leads to a calm analysis of true reason for the downfall. In short, our aggressive feelings and self-pity will ease the tension tentatively, but they hinder in finding the real solution. And self-control is the ultimate answer. How can we maintain self-control? The renowned poet Thiruvalluvar, in his famous Thirukural, speaks about the self-control in his own characteristic style. Though there are many verses in his Thirukural, but due to time limit, I will mention only two of them. First one is guard your power of self-control as your very treasure. Life has no greater gains on earth. And second one is a blister formed by burning, time may heal, but the sting of cruel words rankle the human heart. Though many of his verses seem to be too philosophical, the practical ways to develop self-control can be adopted like this. In our day-to-day activities, we should indulge in games or sports. We expect a certain dignity and decorum in play field. Another similar activities are learning musical instruments, working with our colleagues with a spirit of equality, adaptability, and becoming indifferent to changing circumstances. We should take a realistic view about life. We should be calm and patient and use our thinking and reasoning. It is an indication of maturity. Sometimes when we confronted with a problem, the solution to which is beyond our reach, we should take a stroll, forgetting the crisis. Thereby we can be away from the moment's frustration. While we are detached from the problem, a sudden idea or insight may strike our mind, and this would put us back into the normal stream of good sense and going ahead. Or we may engage ourselves in some work or studying some books of our choice or explore something on Google. We divert our attention and we may feel that our tension is released. Or we should present the matter to our intimate friends. Sometimes he or she may give a simple solution of which we are not aware of. And finally, direct our thoughts to others. Then we will realize that thousands of others are in the worst plight. And we will be consoled to know that we are not the only person with problems in the universe. Hence, instead of becoming aggressive and self-pitying, we should analyze the problem logically and develop self-control. And ultimately, another dimension in our personality will be added. That is a self-control. Thank you very much. Thank you, Anand ji. आपने सेल्फ कंट्रोल ऐसा लाने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए हैं और बहुत वैलिड टिप्स है, बट सेल्फ कंट्रोल के लिए बहुत सेल्फ ट्रेनिंग की जरूरत है, सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है. जब भी हमें गुस्सा आता है तो इतना हम सोचते नहीं, गुस्से से बोल लेते हैं और जिस तरह से आपने कहा वो वर्ड्स वापस नहीं आते. और सेल्फ पिटी भी एक बहुत मुश्किल चीज है. आई मीन, बट आई थिंक लॉट ऑफ मैच्योरिटी एंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट टू मेक द हैबिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. आपने तो बहुत अच्छे टिप्स दिए. थैंक यू आनंद जी, थैंक यू सो मच. और समटाइम लोग बोलते हैं ना, प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम आती है, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? दैट वी शुड नेवर. बिल्कुल, सभी को जी, सभी को ऐसा लगता है मेरे प्रॉब्लम सबसे बड़ी है. थैंक यू सो मच. अभी आनंद जी के बाद उषा दीदी जी, आप अपने प्यार से, आप प्यार भरी आवाज में हमें क्या सुनाने वाले हैं? आवाज ठीक आ रही है मेरी? आ रही है लक्ष्मी? यस यस, बोलिए. Okay. Hello friends, good evening to all of you. I'm very grateful to MRL and Mr. Sen Gupta for giving me this opportunity. The title of my talk today is Storm in a Teacup. ऐसे कैसे हो सकता है, एक छोटे से कप में तूफान कैसे आ सकता है? Let's see. Friends, there are so many different countries in the world and they all have their different languages. But one thing is common in all, that they have adages.
or proverbs. Adage is a form of speech which is more interesting, but it's not direct. We can call it adage or proverb or idiom or metaphors. हिंदी में इसको हम मुहावरा कहते हैं. I will not go deeply into this, but give a few examples. Like we say, don't cry over spilt milk. It means that we should not worry about what has already happened or forget the past. Or when we say you can lead the horse to the water, but you cannot make it drink, means you can advise somebody, but you cannot force them to act on it. Adages are brief statements which reflect commonly held beliefs in the society. It serves as a symbol of collected and accepted wisdom. We all use these proverbs in our daily life, but do we ever stop and think how they came into being, how they originated? One such proverb we normally use is a storm in a teacup. It literally means a lot of fuss being made about something which is not important, or an excessive enthusiasm about a minor matter, or an insignificant matter which is exaggerated out of proportion, or overreacting about something, जिसको हम कहते हैं राई का पहाड़ बनाना या बात का बतंगड़ बनाना. Can we ever imagine a cup of tea that cheers can bring a revolution? Bombayites who toil and commute from one part of the city to another, they very well know the worth of a cup of tea. Let's explore some history and find how this saying came into being. As we all know, the British were ruling all over. They were exhausted by maintaining such a vast empire. They authorized East India Company to carry on tea trade with American colonies. They needed money to sustain it. For that, they introduced a very high tax on tea. Britishers thought they had hit upon a brilliant idea, but history often shows unforeseen results. The idea of tax was so repulsive to the Americans, they refused to buy or serve tea. 3 ships loaded with tea sailed to Boston Harbor. The Sons of Liberty dumped the tea into the harbor. In no time, the sweet fragrance of the cup that cheers filled the air, and as history is witness, became storm in a teacup. Now we all wonder why Americans prefer coffee to tea. Historians might trace their repulsion to this incident. Britishers, on the other hand, stubbornly stick to tea, but it could be a simple case of taste of palate. Like Mahatma Gandhi, with a pinch of salt, created such a thunder in Indian history. It is indeed beyond one's comprehension that one such simple and earthy thing like tea and salt can shake millions in revolt. But in history, you can make mountains out of a molehill. One finds such incidents indeed dramatic and amusing in retrospect. But such tales are in abundance in the incidents of history, where a storm was created in a teacup और राई का पहाड़ बनाया गया. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Usha ji. आपने सचमुच में you have created a storm in the teacup. इतना सिंपल सा टॉपिक को लेके आपने इतना रिसर्च किया और इसको इतना अच्छी तरह से एनालिसिस करके बताया. It was commendable. And yeah, I mean, Americans like coffee and Britishers like tea. आजकल बहुत सारे टीज है. So confusing. Thank you, उषा जी. आपने सचमुच में राय को पहाड़ बना के बताया. It was beautiful. Thank you so much. अभी आइए अग्रवाल जी, हमारे ज्ञान के भंडार हैं. अग्रवाल जी आप हैं? हाँ जी है जी.
धन्यवाद जया जी। सबसे पहले मैं MRL और डॉक्टर सेन गुप्ता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आपके सामने आने का मौका दिया, और सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको थोड़ा सा हट के इस माहौल से ले चलना चाहता हूं। मैं आपको भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुए संवाद को सुनवाना चाहता हूं। तो चलिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के 18वें दिन, जहां भीष्म बाणों की मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान उनके पास आते हैं, तो भीष्म ने कहा, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। Am I audible, मैडम? मेरी Yes, आवाज sir. सुनाई पड़ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सुनाई दे रहा है। भीष्म ने कहा, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण ने कहा, कहिए बिना पितामह। तो एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठाकर हंस पड़े, बोले, कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रहे। कृष्ण बोले, क्यों? भीष्म के पास जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्य कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। उत्तर दें दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण, जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया कि यह केवल तुम्हारी और तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम ही से पूछूंगा कृष्ण। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। यह तुम कह रहे हो कृष्ण? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, बाल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वे चाहे जिस विधि से भी हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं आरंभ होगी केशव? क्या भविष्य इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आता है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी अधिक काम नहीं चलेगा। वह मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण करती रही हो, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पिताजी। दोबारा सुनिए, जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हूं, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह।
तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पिता में। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, तो बतलाइए ना पिता में, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा था ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन ही मैंने तो कहा था अर्जुन से, यही परम सत्य है। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, अब इस धरा पर अंतिम रात्रि है, अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने पर रक्षा करने वाले की धर्म रक्षा करता है। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच अग्रवाल जी। आपने you have explained the dialogue of Bhishma Pitama and Krishna so well, and so many values which were there between in the dialogue are very well conveyed. And उस समय शायद ये शुरू हुआ कि everything is fair in war. अल्टीमेटली धर्म का रक्षा करने के लिए आप किसी भी तरह करो, मगर धर्म की रक्षा करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है जयल चौधरी जी। जयल चौधरी जी, चौधरी सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। 5 मिनट की है ना, तो मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। आपके सामने छोटी सी एक कविता जो मैंने खुद लिखी है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये उस समय लिखी थी जब कोरोना अपने पीक से हटकर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया था और हम लोगों को काफ़ी राहत मिल रही थी कि अब हम एक बड़ी मुसीबत से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इस कविता का शीर्षक मैंने लिखा है मकसद जिंदगी। कहते हैं कि कौन कह सकता है कि किसी को कोई गम नहीं, कौन कह सकता है किसी को कोई गम नहीं, कौन कह सकता है किसी को कोई मर्ज गर्ज या कोई जख्म नहीं। गम किसी का भी छलक जाता है उसकी आंखों से, गम किसी का भी पता चल जाता है उसकी चालों से। गम में कोई लुट जाता है या फिर कोई लुटा देता है अपनी ही हस्ती, अपनी ही मस्ती, लेकिन फिर डूबने लगती है उसकी कश्ती। कोई है जो गम पी लेता है, कोई है जो गम में जी लेता है, कोई सहारा ले लेता है शराब का, कोई सहारा ले लेता है शवाब का, लेकिन कोई बिरला होता है जो सहारा लेता है कायनात के नवाब का। कायनात का नवाब है परमात्मा। कोई बिरला होता है जो सहारा लेता है कायनात के नवाब का। कोई छुप छुप के रोता है, कोई रो रो के छुपता है, कोई गरीबी में रोता है तो कोई सब संभाल ना पाने से रोता है, कोई औलाद ना होने से गमगीन है, कोई उनके फसादों से है परेशान, कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक, कोई पारिवारिक, कोई धार्मिक विवादों से दुखी है। गमगीन तो सब हैं, पर एक छुपा जाता है, एक रुला जाता है। गमगीन तो सब हैं, पर एक छुपा जाता है, एक रुला जाता है। वास्ता है तुमको यारों, वास्ता है तुमको यारों, यारों की यारी यारी का, तुम्हारे गम अगर हम जो बांट सके तो। मना नहीं सकते खुदा को हम, मना नहीं सकते खुदा को हम,
पूजा और इबादत मंदिर मस्जिद में करके रिझा लेंगे उसको हम खिदमत उसके बंदों की करके, रिझा लेंगे उसको हम खिदमत उसके बंदों की करके, इबादत उस बंदा नवाज परवरदिगार की करके। जाओ मंदिर मस्जिद पुकारो उसको, वो अनसुनी कर सकता है सुन करके भी, पर किसी जरूरतमंद की मदद करो तो सुन लेता है फरियाद दौड़ करके भी। कोई रो रो के बोले, कोई ऊंची बोली में बोले, सुनता उसी की वो है जो बोली उसकी बोले, उसकी बोली प्रेम की बोली, सुनता उसी की है जो बोली उसकी बोले। फलसफा कह दो यारों हमसे हमारे कंधों पर सर रख के, फलसफा कह दो यारों हमसे हमारे कंधों पर सर रख के, कुछ कर सके न कर सके दो कदम साथ जरूर चलेंगे। दे सकूं एक भी लम्हा हंसी का खुशी का अगर तुमको जो हम, दे सकें एक भी लम्हा हंसी का खुशी का तुमको जो अगर हम, आपका ये खिदमतगार आपका ये खैर ख्वाह जवाहर की जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, खिदमत तुम्हारी करके इबादत उसकी करके, खिदमत तुम्हारी करके इबादत उसकी करके। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है चौधरी साहब। एंड आपका बहुत जो शानदार चौधरी साहब, बहुत शानदार। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्रेस किया अपने थॉट्स को। और फेथ वर्क्स मेनी टाइम्स एंड हेल्पिंग अदर्स, जिस तरह से अपने आप को आपने ऑफर किया किसी का दुख बांटने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। एंड सचमुच में दूसरों को हेल्प करने से जो हमें हमारी ग्रोथ होती है, हमारा संतुष्टि होती है, उसके तुलना में कुछ भी नहीं। थैंक यू चौधरी सर, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल पोएम। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है कुलविंदर फरमान जी, हमारे गजल क्वीन। कहाँ है कुलविंदर जी? कुलविंदर लक्ष्मी, आई डोंट थिंक शी इज देयर, एक बार फिर भी देख लेती हूँ। आई है, आ गई आ गई आ गई। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। आइए आइए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक a very soulful story of a leaf, a very soulful story of a leaf. I'm trying to read out this, the story of a leaf who very peacefully accepts its fate, very peacefully accepts its fate. A fresh, tender green leaf changes into a brown leaf, gets withered and ready to fall on the ground peacefully. A leaf at peace is the title of my poem. I am a brown leaf preparing to touch the ground. I am a brown leaf preparing to touch the ground, but I have not been like this always. I have seen my spring and summer days. I had been firm and resolute and proud about being attached to my roots, undaunted by several futile attempts to tear me off, thrilled about the battles with the winds that I won, that went long, really long, and I was successful ultimately. I had always been strong, except that today, when I consciously fall attracted by a cosmic call, I realize this way or that, I will remain connected to the ground. I will remain connected to the ground, not scared of being crushed under feet, to be ground to pieces. I know, integrated or disintegrated, I belong to the earth, finally. It is from here, it is from her that I will rise again, taking a new form to be reborn again after the winter. I, the autumn leaf, need a fall to
sorry, to rise again. कहते हैं ना, that once you fall and you rise again, it is like a phoenix that is born again from the ashes. So a leaf tells its story in this way. Thank you. Thank you, Kulvinder. I had goosebumps listening to your beautiful poem, and it is so true. It is our life. It is our life. Yeah, we fall to You're the all ground. heading, yeah, you're all heading Yes, towards it. yes, and we all know that we have to go back to the ground, but with the hope of coming back or not coming back, whatever is in store for us. No, Thank we you so will much. rise again. We will come back and rise again. Yes, yes. An optimistic comment. We end with this. Thank you, Kulvinder. Your poem is as soulful as your ghazals. Thank you so much. Thank you. So thankful. And now, last but not the least, Ramani ji, आइए. आप सुनाइए. We are always ready to listen to you. Thank you, Lakshmi ji. Friends, good evening. In the Sabki Suno series earlier, we have already heard about two famous Indian mathematicians, Aryabhatta and Bhaskaracharya. Today, I intend drawing your attention to yet another mathematician who lived in those times. He was not only a mathematician, he was an astrologer and an astronomer, and his name, he is known by the name Varaha Mihira, whose original name was Mihiracharya. In fact, Mihiracharya was inspired by Aryabhatta to take up astrology and astronomy as a lifetime pursuit. Mihiracharya lived in Ujjain, which was the epicenter of learning at that time under the patronage of the prosperous Chandragupta dynasty, and was hosting a gathering of scholars from all over the world. Mihiracharya's astrological abilities finally caught the attention of King Vikramaditya, who was also known as Chandragupta II, who made him one of the scholars in his court. To make the narrative interesting, I will start with an anecdote in the life of Mihiracharya. King Vikramaditya asked Mihiracharya to cast the horoscopes of all the members of the royal family and give his predictions on their lives. Mihiracharya did the calculations and predicted the untimely death of the prince who will die on turning 18, and that death will be caused by a boar or pig, which in Sanskrit is called Varaha. At the request of the king, repeated calculations were made, but Mihiracharya came to the same conclusions every time. The king ordered the palace to be fortified and protected such that no animal can enter the palace and cause the death of the prince. The Senapati was made responsible for the safety of the prince from an attack by a boar. The king was confident that nothing untoward will happen to the prince. A few minutes after the calculated time of death, the king summoned the Senapati and inquired about the safety of his son. The Senapati assured the king that no animal entered the palace, and so the prince is safe. The king heaved a sigh of relief and turned to Mihiracharya and in a taunting tone said to him, "Your prophecy has been proved incorrect." At this, Mihiracharya respectfully bowed before the king and told him, "Maharaj, the prince is already dead and is on his way to the heavens." The king immediately rushed to the prince's palace along with the Senapati and Mihiracharya. The guards outside the palace did not report any untoward happening, and they told the king that the prince is resting on his bed. While others waited outside, the king, Senapati, and the Acharya entered the room, and to their horror, they found that the prince was already dead. Found that a part of the ceiling made of sandalwood with the sculpture of a boar had fallen on him, and he was already dead. So the king was heartbroken and was pacified by the Acharya, who reminded him of destiny. In spite of his grief, the king was astonished at the precise astrological prediction skills of Mihiracharya.
he conferred on him the title Varaha, which was the insignia of the Chandragupta dynasty, and Mihiracharya became Varaha Mihiracharya, or in short, Varaha Mihira. This is the story of Varaha Mihira. Now, how is he famous? Three significant works of Varaha Mihira are very well acknowledged. These are Pancha Siddhantika. Nothing of this work is available, which was a compendium of the astronomical methods of five methods, the Greek, Egyptian, Roman, compared with two of the Indian methods. Briha Samhita, which is a master collection, an exhaustive study of architecture of temples, gemology, perfumes, eclipses, timekeeping, astrology, cloud formation, etc. He also improved on the sine and cosine tables in trigonometry and finding the binomial coefficients in algebra. The third work was Brihat Jataka, astrological work which popularized the zodiac signs, astrological calculations, casting of horoscopes, kundalis, and predictions for auspicious rituals. This is all today about Varaha Mihira. Thank you very much. Thank you, Ramani ji. Your vast knowledge of so many varied Yes. subjects. I'm really, I'm not so good at the history. Varaha Mihira, something which you mentioned, it was wonderful when you described about him and how he had predicted how good astrologer he is, and astrology is all about the calculation. It is a very vast science. Thank you so much for enlightening us on this particular subject. Thank you so much. Thank you, Lakshmi ji. Lakshmi, just a minute. So on behalf of MRL, sir, thanks each one of you. They were all real pearls of wisdom in different unique fields, whether it is poem or this thing. Thank you everyone, and thanks to Lakshmi for beautifully taking us through this journey of knowledge enrichment by each one of you. Thank you so much, everyone. Now, floor is open to any of you who want to say anything. I also must thank everybody, and this is the first time I was anchoring a program with such esteemed, knowledgeable people, and on various subjects you have all spoken. मैं एक लाइन में एंड करती हूँ. कैसा धन्यवाद करे आपका अल्फाज ही नहीं मिलते. कैसा धन्यवाद करे आपका अल्फाज ही नहीं मिलते. जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती जो आप जैसे दोस्त नहीं होते. Thank you so much. Lakshmi ji, wonderful anchoring.